Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Let's start with our unit number 1, national income. In that we are going to study about circular flow of income and some important concepts in that. Let's begin. First and foremost, marking scheme of this session, updated one. So like last year you had 2 books. This year also you have 2 books. Part A, Part B. Part A is your introductory macroeconomics and Part B is your Indian economic development. You can see the marks assigned to each and every chapter. And last we have what Part C, project work, is of 20 marks. I'll be making one separate video for that, for project work. Let's go ahead. So about your syllabus, Part A, because we are going to see macroeconomics chapter, so we have to see first the syllabus, whatever syllabus we have. First unit your national income and related aggregates, and likewise we have 5 units. I have shared one particular PDF in the group itself just to see that. So the first and foremost term which we always encounter is macroeconomics. What is macroeconomics? Like in class 11th you had microeconomics. It was the study of smallest possible unit of economy. So we were studying some companies, we were studying some individuals, some commodities, its supply, demand, prices. But here in macroeconomics will not be studying the smallest part but the economy as a whole. Everything is broader picture, everything is aggregate form. So macroeconomics is a study of economy as a whole. Macro, M-A-K-R-O, a Greek prefix means large. So study of largest part of the economy. So economy itself as a whole we are going to study. It studies aggregate indicators such as GDP, gross domestic product, unemployment rates, national income. That is what the most important stuff, because this unit is based on national income itself, calculation and basic concepts. And aggregate demand and aggregate supply, will be seeing it in the further chapters. Some more basic terms. What is income? We know income kuch hota hai, but actually income is what? It's money that we receive for doing any economic activity or some investments. So what is national income then? National income is what? National income means the value of goods and services produced by a country during a financial year. अब country कुछ produce कर रही है. Country produce कर रही है means whatever 3 sectors are producing. We have 3 sectors: primary, secondary, tertiary. We all know that primary sector includes agriculture, secondary manufacturing, and tertiary is your services. So all 3 sectors together, whatever they produce is what your national income. So circular flow में अब क्या आता है? Because chapter name is what? Circular flow of income. We have seen income, national income, circular flow. By literal meaning of that, circular flow is what? Any flow or motion which occurs in a circle, or cyclic, which is cyclic in nature, is what we call as circular flow. So circular flow of income means flow of income or money in a circle. So आपकी income और money जब एक circle में flow करती है, we call it what? Circular flowing income. Now the $1 million question here arises here is, what is this circle? कौन से circle की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि income या money flow हो रही है? Before going into that, we have to understand some more topics. So first see what types of economy, क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम किस economy में deal करेंगे. So we have 2 types of economy here: closed economy and open economy. Closed economy, we have 2 different models. First model is 2-sector model, which constitutes households and firms. That means 2-sector model में household और firms ही आते हैं, and 3-sector model में आपका एक government sector बढ़ जाता है. That means household, firms and government sector. Open economy, as the name suggests, open economy में इन 3 sector model में 3 ingredients जो है household, firms and government sector के अलावा there is one more component added, is what? Rest of the world. Open economy, as the name suggests, the country is not closed but open for rest of the world. That means we can have what? Export and import
NFIs and all, we are now have all those things in picture. But in closed economy, as you can see that we are nationalist, we are not concentrating on abroad, so we are confining ourselves inside our political frontier. So closed economy has what? Two sector model having household and firms. Three sector model has what? Household, firms and government sector. But in open economy we have one more component added is what? Rest of the world. सारे nation, USA, UK, Japan, China का नाम मत लो, आगे बढ़ते हैं. Factors of production and factor payments. We have in class 11 we have understood about factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, and we have corresponding factor payment. उसके बदले में क्या मिलता है? So we have rent, wages, interest and profit. So first talk about land. Land we can see that land के बदले में आपको मिलेगा rent. If any producer takes land on rent, he has to pay the rent. Labor, if any producer employs labor gets what? Wages. Then capital, if you have taken loan as capital, then you have to pay interest. An entrepreneur who takes all the risks and start any business venture gets what? Profit as reward. So this was the factor production and factor payments. Moving further, अब ये जो सर्कुलर बनता कैसे है उसमें तीन phases हम देखने वाले हैं. The three phases, the all important three phases which makes this circle. So as you can see that in picture we have three phases: production, income and expenditure. So what happens first phase is what? The producer produces goods and services, sells in the market and gets money, gets income in turn of all those goods and services. अब ये money producer के पास में आ गई तो money क्या करेगा? वो second phase जो income phase है उस फेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए उस सेकंड फेज को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज. इन दिस फेज द इनकम जनरेटेड इन फर्स्ट फेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है बच्चों? अभी बताया था, याद करो. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इन चारों को उनके काम के बदले में पैसा मिलता है. दैट इज व्हाट योर इनकम इज. एंड इन थर्ड फेज ये सारी चीज़ें जो चारों कंपोनेंट्स को जो पैसा मिला है इनकम के फॉर्म में वो खर्चा कर देते हैं थर्ड फेज में. और वो खर्चा करके किसके पास जाएगा? वापस से प्रोड्यूसर के पास में. सो वी हैव अ सर्कल फॉर्म्ड हो गया बच्चों. क्या हुआ? प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड देन प्रोडक्शन कमिंग बैक. सो दिस इज व्हाट द सर्कल फॉर्म्ड. बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दैट वी हैव टू सी एन अजम्पशन. टू सेक्टर मॉडल में क्या है हमें देखना है कि वी आर नॉट सेविंग. No one, neither household nor firms, no one is going to save anything. That means if firm is operating, whatever firm is getting in form of income or profit, the firm is distributing entire income in factors of production. That is rent, wages, interest and profit. It is nothing keeping it with itself. So undistributed profits are zero. Undistributed profit मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसकी वैल्यू जीरो है. मतलब सारा कुछ क्या कर दिया है? बांट दिया है और ठन गोपाल हो गए हम. वही हाल किसके साथ में है? हाउस होल्ड के साथ में. सो हाउस होल्ड वट एवर हाउस होल्ड दे आर अर्निंग वट एवर इनकम दे हैव, इट इज कंज्यूम्ड. मतलब पूरा खर्चा कर देते हैं. 10,000 कमाया, 10,000 खर्चा कर दिया, ठन गोपाल दोनों. सो हाउस होल्ड के पास भी पैसा कुछ नहीं बचा, जीरो है, और प्रोड्यूसर्स के पास में पैसा कुछ बचा नहीं है. दैट मीन्स नथिंग, नो सेविंग्स एट ऑल, एवरीथिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज व्हाट द सिंगल assumption to be made. Now moving further, this is what the all important diagram which you all have to make if the question comes in the examination. What is a circular flow of income? Two sector model here. I just forgot to tell you all that you don't have to be bothered about 3 sector model and 4 sector model. That is गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही कोर्स में है. दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स. सो वी हैव टू सी द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू. we are not bothered about government intervention and rest of the world intervention. वो आपके सिलेबस के बाहर है. सो हाउस होल्ड एंड फर्म्स. अब ये भी बात होगी कि कौन पहले स्टार्ट होगा. तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो वी स्टार्टेड राइट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाउस होल्ड गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यू कैन सी दैट हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दिए? फर्म्स को दिए.
फर्म्स यूटिलाइज दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड उससे गुड्स एंड सर्विसेज बना के किसको वापस दे दिए, हाउस होल्ड को। लाइकवाइज यहाँ भी देखो, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय व्हाट, हाउस होल्ड, they gave money to home firms, and after receiving this money from consumers, firm distributes it from factor payment to the household, rent, wages, dividend, interest and profit वापस किसके पास में चले गया, household के पास में चले गया। So we have to first see that different kinds of flows here. The next slide shows that types of circular flows, real flow and money flow. अब जो हमने दोनों फ्लोज देखे उसको हमको कैटेगराइज करना है रियल फ्लो और मनी फ्लो में, क्योंकि ये दो एक्चुअली फ्लोज होते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट फ्लो वी आर स्टडिंग हियर इज रियल और फिजिकल फ्लो। इट इज़ अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज गिवन बाय हाउस होल्ड, मतलब जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म्स को दी थी वो, और फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज उनको हाउस होल्ड को जो वापस की वो, ये वाला फ्लो, इसको हम कहते हैं रियल या फिजिकल फ्लो। अब रियल और फिजिकल फ्लो को आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंट ये है कि इसके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, नो मनी इन्वॉल्व इन दिस फ्लो। यू कैन सी दैट इन एनिमेशन ऑल्सो देयर इज नो मनी, ओनली वर्क इज बीइंग डन, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ काम हो रहा है, कोई मनी इन्वॉल्व है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस आर important or major diagram we have to show. So the two arrows, you can see that the first, the top and bottom arrows, black arrows are your real or physical flow. इसको आप रियल फ्लो से भी जान सकते हो, फिजिकल फ्लो से भी जान सकते हो। नेक्स्ट चले, देन व्हाट वी हैव मनी फ्लो, द सेकंड टाइप ऑफ फ्लो, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो भी कह सकते हैं, जिसमें मनी ही इन्वॉल्व होती है, मनी के अलावा कुछ दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। सो इट्स अ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड ने फर्म को दिया था, उसके बदले में कुछ पैसा चाहिए होगा उनको, वो क्या कहलाता है, फैक्टर पेमेंट्स। सो फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट्स दिए फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, एंड हाउस होल्ड ने भी पैसा दिया है कुछ, वो पैसा किसके फॉर्म में दिया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की है उसके हिसाब से दिया है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दिस फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो और मॉनिटरी फ्लो। सो रेड एरोज जो बीच वाले दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कौन से फ्लो हो गए, मॉनिटरी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। अगर एग्जाम में आता है रियल फ्लो तो आपको सिर्फ बताना क्या है, ब्लैक एरोज, और आता है मनी फ्लो तो ये रेड एरोज वाला एक्सचेंज बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। You don't have to bother about the black arrows if the money flow is asked, and you don't have to bother about red arrows when real flow or physical flow is asked. Next, after this a small concept, stock versus flow. अभी हमने देखा था फ्लो के सारे टाइप्स हमने देखे, रियल फ्लो, मनी फ्लो, बट वी हैव टू सी नाउ स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। तो स्टॉक कंसेप्ट नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक कंसेप्ट, स्टॉक कितना है, हम कहते हैं नहीं तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, अभी चल ही रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपके पास में वीट का स्टॉक कितना है, आपके पास में सब्जियों का स्टॉक कितना है आज की डेट में। सो स्टॉक कंसेप्ट इज व्हाट, स्टैटिक कंसेप्ट। सो एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसमें टाइम डायमेंशन, जो पर्टिकुलर टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, एक टाइम पे आपके पास में कितना है, तो वो स्टॉक वेरिएबल कहलाता है। स्टैटिक कंसेप्ट होता है, एग्जांपल वेल्थ, आपकी आज संपत्ति वेल्थ कितनी है। वाटर इन टैंक, ओवर अ टैंक में हमने वाटर फुल कर दिया मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में कितना है, आफ्टरनून में कितना है, इवनिंग में कितना है, नाइट में कितना है। सो वी आर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम बॉदर्ड है कि अभी कितना है। लाइक वाइज कैपिटल, आपने व्हेन द बिजनेस हैड स्टार्टेड आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। फ्लो, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड ड्यूरिंग और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो देयर इज नो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट there is a duration, there is a starting point and ending point. It has a time dimension like per hour, per month, etc., per year, per 3 years, per trimester, a decade, a century. ये सब क्या बता रहा है, फ्लो, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एंडिंग पॉइंट हो सकता है। ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है फाइनेंशियल ईयर का
1 अप्रैल, एंडिंग हो गया 31 मार्च। कैलेंडर ईयर का होता है 1 जनवरी, 31 दिसंबर एंडिंग होता है। और हमारा एकेडमिक सेशन का क्या होता है 1 जुलाई से लेके मार्च 31 तक। So this is what your flow concept. Example, income, because you work for 30 days and then you get income, like salaries of employees what 30 days की मिलती है, so it has starting point, ending point. Profit also is what measured over the period of time, like annual profit होता है, so वो क्या होता है income. Water in a stream is what flowing stream, उसमें कितना पानी बह रहा है, flow concept. So stock variables is what, जब स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे मेजर होता है, और फ्लो की बात हम जब करते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसका होता है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ये आंसर दिए हुए हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टॉक और फ्लोज, फर्स्ट इज इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री राइट नाउ, क्योंकि इसमें भले इसमें दिया नहीं एज ऑन टुडे, बट इन्वेंट्री वेन एवर इट इज सेड, इन्वेंट्री क्या है, तो हम आज की बात कर रहे हैं, तो वट एवर इन्वेंट्री वी हैव टुडे दैट इज स्टॉक कंसेप्ट. Purchase of raw materials. Purchase of raw materials is what? A process. Process has a starting point and ending point. So purchases, whenever purchase word is used, we call it what? Year concept. एक साल में कितने purchases हुए हैं. So purchase of raw material is what? Your flow concept. Employees, static concept. Stock concept. New hires, कितने आए हैं अंदर, flow हो रहा है, motion है. New hires, flow concept. Population. Population is what? As on today, of course, population, सिर्फ इतना बोला population, that means we'll understand that what population we have today, so it's a stock concept. Net income is what? Measured over a period of time. Net तभी तो निकला, सब हमने सब subtract किया तो हमें क्या मिला, net income मिला. Assets what we have, like we have wealth, capital, inventory, वैसे ही assets आज आपके पास में कितना है, तो stock. Cash अभी जितना है वो cash flow कंसेप्ट नाम से समझ में आ रहा है. मोरल स्टॉक है. ले ऑफ्स मतलब एट्रीशन कह सकते हो आप, एम्प्लॉयज को निकालने की प्रोसेस को ले ऑफ कहते हैं. सो ले ऑफ कितना है मतलब फ्लो. ऑर्डर्स दैट आर नॉट शिप्ड, दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्स दैट आर नॉट शिप्ड, दे वर टेकन आउट ऑफ इन्वेंट्रीज, दे वर टेकन टू व्हाट शिपयार्ड्स, बट दे वर नॉट शिप्ड, सो दे गॉट बैक टू द इन्वेंट्रीज और गोडाउन में वापस आ गए. सो देयर इज अ मूवमेंट इन दैट, इट इज व्हाट योर फ्लो कंसेप्ट. डेट रीपेमेंट मतलब क्या होता है, आप उसको रीपे कर रहे हो, सो फ्लो कंसेप्ट हो गया. आई एम लीविंग सर्टेन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, दीज आर ऑल समवॉट इजियर वंस, एंड व्हेन आई कम बैक आई विल सर्टेन क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 15. सो मैं जितने भी बच्चे हैं सबसे 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सो बी रेडी विद दैट. टिल देन, गुड बाय.